السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This our topic of discussion is judicial review. Before we start reading uh, the power of judicial review of the Supreme Court, uh, we will discuss a little bit about development of the Constitution and the Supreme Court as the highest court of appeal. تو جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج کے لیکچر سے پہلے جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں جوڈیشل برانچ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے اندر ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے ایز این انٹرپریٹر آف دی کانسٹیٹیوشن. یعنی کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن کرنے والا یو ایس اے کے اندر جو انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از سپریم کورٹ آف یو ایس اے. اگر سپریم کورٹ یو ایس اے کے اندر ایز این انٹرپریٹیشن انسٹیٹیوٹ نہ ہوتا تو آج فیڈریشن آف یو ایس اے جو ہے وہ الائیو نہ ہوتی، وہ قائم نہ ہوتی، اور یو ایس اے جو ہے وہ مختلف جو ہے ملکوں کا مختلف ملک اس میں سے نکل جاتے بہت سارے. تو جو فیڈریشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کو تصدیق انفیکٹ جو رکھا ہوا ہے وہ ہے اسی میں رکھا ہے سپریم کورٹ نے. تو جو کانسٹیٹیوشن کی جو موجودہ فارم ہے وہ اس کی جو وہ بھی سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے، اور سپریم کورٹ نے جو اس کے سامنے ڈفرینٹ ٹائپ کی کانسٹیٹیوشنل کنٹروورسیز ارائز ہو کے ڈیسائیڈ ہونے کے لیے آئیں، تو اس میں سپریم کورٹ نے ایز این امپائر جو فیصلے دیے ان فیصلوں کی وجہ سے جو موجودہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی ایکچوئل فارم کے اندر موجود ہے. تو پھر سپریم کورٹ نے in the beginning when the Federation of United States of America was a union of only 13 states, and the economy of USA was based upon agriculture and pastoral activities, and the Federation of United States of America is a union of 50 states nowadays, and the economy is based upon industrialization, and the population has also increased from the beginning of the from the inception of the United States of America, when the USA was only union of 13 states. تو 13 اسٹیٹ کی یونین چھوٹی سی آبادی اور جو اکانومی ہے
ایگریکلچر اور جو بھیڑ بکریاں جو پالنے کا شیپرڈ کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر بیس تھی. تو آج اکانومی ہے انڈسٹریلائزڈ بیس, آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور 50 اسٹیٹس کی یونین ہے. تو سپریم کورٹ نے اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے چینجنگ ٹرینڈز آف دی سوسائٹی جو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے دیے ہیں اینی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اندر, تو آپ اسی نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈیولپ کر کے اس جو موجودہ فارم ہے وہاں تک لے کے آئی. تو آپ یہ کہہ لیں ان شارٹ جو ہے جسٹس ہیگس ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیرکنز آر انڈر constitution, but the constitution is what the judges say it is. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ جو ججز کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن یہ ہے, یعنی کانسٹیٹیوشن کی جو بھی انٹرپریٹیشن ججز کریں گے تو وہی کانسٹیٹیوشن ہے. تو آل امیرکنز آر لیونگ دیئر لائفز انڈر کانسٹیٹیوشن آف USA. The highest court of appeal, the Supreme Court, is the final court of appeal in the United States. It can entertain appeals from the state high courts and lower federal courts. Though its appellate authority is limited as not all cases may be appealed, but there is no appeal against its judgment. Its opinion on a question of law is final. It has been termed as a super legislature or a third chamber. It stands above both the President and the Congress. Unlike acts of the Congress, it is immune to presidential veto, and unlike presidential veto, it is immune to overriding by Congress. In a sense, it may be called the most autocratic political institution on America. From the above account, it is thus clear that the Supreme Court is an institution of great importance in the American political system. It has been, according to FINRA, the cement which has fixed from the whole federal structure. Lasky rightly called it as one of the most successful institution, not surpassed by any other institution in its influence in the life of the United States. تو آپ پھر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ از دی فائنل کورٹ آف اپیل ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو اس کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ سے, اور جو جتنی لوور کورٹس ہیں, لوور فیڈرل کورٹس اور اسٹیٹ ہائی کورٹس, ان کے خلاف ان کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور وہ جو اپیل کا رائٹ ہے لوگوں کا, دیٹ رائٹ از ناٹ unlimited. That appellate jurisdiction of Supreme Court is although limited, but the finality is obtained by the Supreme Court on any matter of law یا any question of law. تو اس کی جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہوگی, that shall be final on any question of law if it is challenged in Supreme Court. It has been termed as a super legislature or a third chamber. یعنی سپر لیجسلیچر مین لیجسلیچر جو ہے وہ دیٹ از اے کانگریس ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور باقی اسٹیٹ لیجسلیچر ہیں جو اسٹیٹس ہیں ان کے. تو یہ ان سب کے اوپر ایک سپر لیجسلیچر کا رول ادا کر رہی ہے سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کے پاس یہ سپر لیجسلیچر جو آتھر نے اس کو کہا ہے, وہ کیوں کہا ہے, وہ اس لیے کہا ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ کوئی بھی جو لا بناتا ہے, دیٹ لا از sent to the president for his assent and signatures. Without the assent of the president and his signatures on that law made or passed by the legislature,
that cannot become a law or that cannot have a force of law. The legislation passed by the legislature and uh, uh, have the assent of president and his signature on that legislation shall give the force of law to that legislation. Without the signatures of president on that legislation shall not have a force of law. तो फिर क्या है, the president have power of veto uh, of to any legislation passed by the कांग्रेस. कांग्रेस कोई भी लॉ बना के प्रेसिडेंट को भेजे कि आप इसके ऊपर सिग्नेचर करें और अपनी असेंट दें, प्रेसिडेंट है पावर टू वीटो दैट लेजिस्लेशन. तो अगर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है वीटो की, तो इट मींस all practice made by all efforts and made by the legislature, uh, any legislation initiated from uh, uh, House of Representatives at the lower house, and if passed then sent to the Senate. If passed from the Senate as well, then it will be sent to the president. तो फिर ये जितनी एफर्ट की गई है हाउस के अंदर और सेनेट के अंदर, साल हाँ साल भी लग जाते हैं या महीने लग जाते हैं. तो अगर प्रेसिडेंट उसको वीटो कर दे, देन लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अपने आप को एक बेबस या कह लें वल्नरेबल इंस्टीट्यूट फील करती है. तो फिर क्या है, उसके ऊपर फिर जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने फिर ये लेजिस्लेचर को ये राइट दिया है, यू कैन ओवर राइड द वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट. उसी लॉ को फिर दोबारा अगर कांग्रेस के अंदर लाया जाए और उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवा लिया जाए, देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होते. इट मीन्स के लेजिस्लेचर के ऊपर जो है वीटो के इख्तियारात हैं प्रेसिडेंट के पास, और फिर जो प्रेसिडेंट का वीटो है उसको लेजिस्लेचर ओवरराइड कर सकती है. तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसके ऊपर ना तो किसी का वीटो का इख्तियार है, और ना ही अगर किसी को इख्तियार हो जैसे प्रेसिडेंट को कांग्रेस के ऊपर है, तो फिर कांग्रेस को ओवरराइड करने का इख्तियार है. तो ऐसी दोनों सूरतों से ये वाहिद इंस्टीट्यूट है यूएसए के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो अम्यून है. तो सुप्रीम कोर्ट इज above on any other institute of any other organ of the United States of America. तो जो फाइनल जो बात होगी सुप्रीम कोर्ट की होगी, ना कि प्रेसिडेंट की होगी, ना लेजिस्लेचर की, ना स्टेट लेजिस्लेचर की. कोई भी इशू राइज होगा और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में ही सेटल होना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा या उस डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उसकी ओपिनियन होगी, दैट शैल बी फाइनल. तो फिर वो ये अक्सर ये कह रहा है कि ये अमेरिकन फेडरल सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है. तो फिनर ये कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने टू प्रोटेक्ट द फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या कह लेंगे टू कीप इंटैक्ट, यानी फेडरेशन को महफूज रखने के लिए, फेडरेशन को विद पीस एंड हार्मनी उसको जारी रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट एज ए सीमेंट, जैसे एक सीमेंट के साथ बिल्डिंग बनाई जाती है और वो बहुत मजबूत होती है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट का किरदार अदा किया है फॉर द continuity of the Federation of United States of America. And
to make it firm and strong. उसके बाद ये फिर आखिर ये कहता है कि ये सबसे ऊपर क्योंकि अदारा है, इसके ऊपर कोई अदारा नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिस्ट्री के अंदर ये भी देखा है कि इसको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। जैसे पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि जजेस जो हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। हमारी हिस्ट्री इस चीज से बड़ी पड़ी है। जस्टिस कयूम को फिल्म आया था शहबाज शरीफ का, when जरदारी वाज ऑन ट्रायल इन हाई कोर्ट, तो उनको जस्टिस कयूम कह रहे थे कि शहबाज शरीफ कह रहे थे उम्र कैद भारतीय उम्र कैद। तो फिर इसी तरह ये पिछले दिनों भी एक जज की वीडियो लीक हुई है, मैं नहीं नाम लेता, तो ये आजकल मामला हाईलाइट है। तो फिर ये इस तरह आप कह लें कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी जुडिशरी है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हैं, वो अक्सर औकात कंप्रोमाइज कर जाती हैं और इन्फ्लुएंस होती हैं। लेकिन यूएसए की सुप्रीम कोर्ट कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की यही जो अनबाइज्डनेस एंड इम्पार्शलिटी है, यानी गैर जानबदारी जो है, इसकी वजह से सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनका इसके ऊपर एक ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और वो जो उसके ऊपर कायम है। अच्छा, उसके बाद ये बताया गया है कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। द मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, बाय जुडिशियल रिव्यू वी मीन द पावर ऑफ द judiciary to determine whether a law passed by the Congress or any law enacted by a state legislature or any uh, a provision in the state constitution or any other public regulation having the force of law is in consonance with the constitution. If it is not, the court refuses to give effect to the statute in question in determining the constitutionality of the legislation. The court is not concerned with the wisdom, experience, or policy of legislation. In the words of the Chief Justice Marshall, it neither approves nor condemns any legislative policy. Its delicate and difficult office is to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with or in contravention of the provisions of the Constitution, and having done that, its duty ends. तो जुडिशियल रिव्यू जो है, हमने जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, आपकी क्लास चौथा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर्स ग्रांटेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस किया था। अब हम उसको मजीद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने उसको इन शॉर्ट किया था, आप इसको इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें फिर यही जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग उन्होंने बताया गया है कि वो क्या है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू डिटरमाइन whether a law passed by the Congress or any law enacted by state legislature
or any provision in the state constitution or any other public regulation having the force of law is in consonance with the constitution. इसका मतलब है कि कोई भी लॉ जो बनाया गया है बाई कांग्रेस या कोई लॉ पास किया गया है बाई द स्टेट लेजिस्लेचर या कोई ऐसा रेगुलेशन बनाया गया है कोई पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से जिसकी कोई फोर्स ऑफ लॉ है, क्या वो लॉ made by Congress, law made by state legislature or a regulation made by a public authority, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या उसके अगेंस्ट। तो ये चीज जो इसको डिटरमिन करना किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये डिटर्मिनेशन जो है इस प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब ये चीज डिटरमाइन करेगी constitutionality of the any law passed by the Congress or state legislature or any regulation by a public authority, उसकी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसने सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी डिटरमिन करनी है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इस चीज के साथ कोई कंसर्न नहीं होता कि ये जो लॉ बनाया गया है इसके पीछे बहुत ही ज्यादा विजडम है या इसके पीछे बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों की सालों की मेहनत है या कोई लेजिस्लेचर की कोई पॉलिसी जो है। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज से सुप्रीम कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं कि इस लॉ को बनाने में कितने साल लगे, कितने एक्सपीरियंस लोगों की मेहनत हुई है, या इसका ये कोई स्टेट की पॉलिसी है जो मुल्क के अंदर लोगों के मफाद के लिए बनाई गई। तो इन चीजों से सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता। When Supreme Court sit to exercise the power of judicial review, when Supreme Court sit to declare a law constitutional or unconstitutional, तो ये इन सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को नहीं देखती। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी हाँ जी, अच्छा भेज दें। ये भाई आप ना एक सेकंड में यार होल्ड रखिए बस। In the words of the Chief Justice Marshall, it neither approved nor condemned any legislative policy in it delicate and difficult offices to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with or in contravention of the provision of the Constitution. तो जॉन मार्शल चीफ जस्टिस गुजरे हैं हिस्ट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसके
اس نے نہ تو کسی لا جو بنایا گیا ہے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ اپروول دے دیں کہ جو ججز ہیں اگر ٹرمپ کی پارٹی کے ہیں تو اگر ٹرمپ کی پارٹی جو ہے اس کو میجورٹی حاصل ہے کانگریس میں تو وہ کوئی لا بنا دیں تو اگر وہ چیلنج ہو جائے تو وہ اپنی پارٹی گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے اس لا کو اپروو کر دیں. اگر ججز جو ہیں اس کی اپوزٹ پارٹی کے ہیں تو اس کو ڈس اپروو کر دیں یا اس کو کنڈیم کر دیں. یہ ججز نے کام نہیں کرنا ہوتا ہے. ججز نے تو جسٹ اونلی اینڈ اونلی یہ چیز دیکھنی ہے کہ آیا یہ جو لا بنایا گیا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دی ٹرمز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے یا اس کے اگینسٹ. بس سپریم کورٹ نے نہ تو دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے, کتنے تجربہ کار لوگوں جو ہیں انہوں نے اتنی محنت کی ہے, یا یہ پالیسی جو اس لا کے اندر بنائی گئی ہے دیٹ از بینیفیشل ٹو دی پیپل آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یا نہ ہی اس نے کسی لیجسلیشن کو اپروو کرنا ہے نہ کنڈیم کرنا ہے. اس نے صرف اور صرف دو چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی دیکھنی ہے آیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, تو اگر تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو سپریم کورٹ اس لا کو اپہیلڈ کر دے گی, یا پھر سپریم کورٹ دیکھے گی آیا یہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں یہ اس کے خلاف ہے, تو پھر سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گی. Even if the court considers the act unwise and harmful to both public and private interest, it is its obligation to sustain the act provided it is within the delegated power. As we know, the Constitution is a general document which requires a great deal of interpretation to discover its meaning. It gives powers to the executive and the legislature. While doing some act in pursuance of their powers, they give their own interpretation to the words of the Constitution. If a person thinks that the legislature has exceeded its constitutional power in acting a law, um, he may challenge the constitutionality of the law in the court. In deciding the case, the court interprets that the Constitution to determine the constitutionality of the act challenged. This power to interpret the Constitution and determine the constitutionality of the statute is called the power of judicial review. السلام علیکم. آئے اچھا 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 چلو ٹھیک. ہیلو, ہاں جی, آ رہے ہیں بس آئے, ایک منٹ سے آ رہے ہیں. اچھا, تو سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ جو لیجسلیشن وہ بنائی گئی ہے کہ یہ انوائز ہے. Even if the court considers the act unwise and harmful to both public and private interest, it is its obligation to sustain the act provided it is within the delegated power. یعنی اگر سپریم کورٹ یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے قانون بنا ہوا, لیکن سپریم کورٹ نے پھر بھی یہی دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس کی جو ڈیلیگیٹڈ پاور ہے جوڈیشل ریویو کی, اور کیا سپریم جو لا بنایا گیا ہے وہ ود ان دی اسکوپ جو لیجسلیچر کو
کیا گیا ہے کہ آپ یہ لا بنا سکتے ہیں اور یہ لا نہیں بنا سکتے. جیسا کہ آرٹیکل 1 کے سیکشن 9 میں کانگریس کو منع کیا گیا ہے جو لا نہ بنانے سے، تو کیا یہ اس میں تو نہیں آتا جو لا بنایا گیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرے گی سپریم کورٹ. ڈٹرمن کرنے کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ دے گی انٹرپریٹیشن کے بعد، وہ اس کو کہیں گے کہ سپریم کورٹ ہیز ایکسرسائز دی پاور آف جوڈیشل ریویو. Judicial review does not only apply to federal and state statutes, its scope is wider. The constitution of the states, treaties made by the federal government and the orders issued by the federal and state executive authorities come within its purview. However, questions of political nature do not fall within its jurisdiction. This has resulted in a restoration of public confidence in the Supreme Court. تو سپریم کورٹ کی جو پاورز آف جوڈیشل ریویو ہیں وہ ڈز ناٹ اونلی اپلائی ٹو دی فیڈرل اینڈ اسٹیٹ اسٹیچیوٹ. یعنی جو جوڈیشل ریویو کی پاور سپریم کورٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے not only on the state statutes یا legislation made by state legislature or legislation made by the Congress. ان دو کی legislation کو دیکھنے کے لیے ہی کہ یہ آیا یہ آئین کے مطابق ہے کانسٹیٹیوشن کے نہیں، اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہی نہیں ایکسرسائز کرے گی، بلکہ دی سپریم کورٹ کین ایکسرسائز دی پاور آف جوڈیشل ریویو اپون the states, treaties made by the federal government and orders issued by the federal executive and state executive authorities are also comes under the uh, scope of power of judicial review of the Supreme Court. تو اس کا مطلب ہے جو سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل ریویو کی پاور ہے وہ کون کون سے جو ایسے ایکشن ہیں جو اسٹیٹ لیجسلیچر اور جو ایگزیکٹو ہیں وہ اٹھائیں گے تو اس کے اوپر ایکسرسائز کرے گی. وہ ہے کہ اسٹیٹ لیجسلیچر کوئی لا بنائے، کانگریس کوئی لا بنائے، یا فیڈرل ایگزیکٹو پریزیڈنٹ کوئی آرڈر ایشو کرے، یا اسٹیٹ ایگزیکٹو جو گورنر ہے اگر وہ کوئی آرڈر ایشو کرے، یا پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کوئی ٹریٹی بنائے کسی دوسرے ملک کے ساتھ. تو یہ 4-5 جو ہیں ایکشنز ہیں تو ان کے اوپر جوڈیشل ریویو کی پاور ایکسرسائز کرے گی سپریم کورٹ if those actions are challenged by a citizen of the United States of America in Supreme Court. Constitutional basis for judicial review. The American Constitution does not specifically grant the power of judicial review to the Supreme Court. Some writers have challenged the court's right to exercise this power. President Jefferson had declared that the design of the founding fathers was to establish 3 independent departments of government and to give the judiciary the right to review the acts of the Congress and the President was not only the violation of the doctrines of the separation of powers and limited government, but it was also the violation of the intentions of the framers of the Constitution. ہاں جی یار تو چلا جا اتنے انہوں نے جا کے ملنا جا کے تو کیا وہ دوسری عدالت ہے بس جا کے انہوں نے ٹکر تو صحیح. But it was also President Jefferson had declared that the design of the founding fathers was to establish 3 independent departments of government and to give the judiciary the right to oppose the acts of the Congress. And the President was not only violation of the doctrines of separation of powers and limited government, but it was also the violation of the intentions of the framers of the Constitution
However, evidence records that majority of the members of Philadelphia Convention favored judicial review. Alexander Hamilton intended the Supreme Court to have the power to set aside congressional legislation. He suggested independent judiciary as an excellent barrier to the encroachments and oppressions of the representative body. A specific provision was not added because they believed the power to be clearly implied in the language of Article 3 and Article 4, Section 2 reads, "This Constitution and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made under the authority of the United States shall be the supreme law of the land." Article 3, Section 2 reads, "The judicial power shall extend to all cases in law and equity arising under this Constitution, the laws of the United States, and the treaties made or which shall be made under this authority." तो जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो कहाँ से ली गई है, उसकी बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफिकली ग्रांट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट, यानी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी बेस के ऊपर जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले हैं या जूरिस्ट हैं, जब लॉ को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू की पावर को क्रिटिसाइज किया है। और हिस्ट्री के अंदर एक जो जेफरसन गुजरे हैं प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि ये जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट दिया था फॉर ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव, ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट गिवन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी वायलेशन है। हेलो, चलो हो गए तो बस ठीक है। ये उसकी वायलेशन है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट दिया गया है इसके अंदर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है इसके अंदर। उसके बाद फिर वो जो लेकिन जो हिस्ट्री है उसके अंदर फिर ये अदरवाइज भी आता है कि जेफरसन का जो व्यू पॉइंट है उसके यानी अगेंस्ट अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जो फिलाडेल्फिया के अंदर कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, तो उसके अंदर जो एक डेलीगेट्स आए थे, तो एक डेलीगेट था अलेक्जेंडर हैमिल्टन, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी ये इंटेंशन थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास ये पावर होनी चाहिए टू सेट असाइड कांग्रेसमैन लेजिस्लेशन। तो उनका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट शुड set aside any law made by the Congress if that law is in violation of the Constitution। और उन्होंने ये सजेशन इसलिए दी थी कि जितने भी अदारे हैं, तीनों जो आर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, ये एक दूसरे के मामलात या अख्तियारात या पावर्स के अंदर इंटरफेयर ना करें और उनके अंदर इंटरफेयर करते हुए इंक्रोचमेंट ना करें। तो इस बेस पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो है उनकी ये इंटेंशन थी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर जो है इम्प्लाइड लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल 3 सेक्शन 2 और आर्टिकल 4 सेक्शन 2 वहां से उन सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सट्रैक्ट की है। और उसके अंदर जो आर्टिकल 3 सेक्शन 2 में ये बताया गया, जुडिशियल पावर shall extend to all cases in law and equity arising under the Constitution, the laws of the United States and treaties made or which shall be made under this authority। तो अभी ये क्लास खत्म होने के बाद ये रिज्यूम हो जाएगी, आपने जाना नहीं है तो क्या उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, तो इसके बाद आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो क्लास एंड होने के बाद ये रिज्यूम करेंगे।
you can ask any question if you have in your mind.